हेलो माय रॉक स्टार्स। आज हम इस वीडियो में प्लांट किंगडम को 1 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज करेंगे एंड दिस इज अ हाई वेटेड चैप्टर फॉर योर नीट एग्जाम, क्योंकि नीट एग्जाम में इससे 3 to 4 क्वेश्चंस आ सकता है। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर द प्लांट किंगडम। Over the period of time, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है with respect to plant kingdom has been changed. And in the beginning of the chapter, they have given about the different classification system. The very first classification system is artificial system of classification system. So this type of classification system considers only few characters, and also it has been मतलब equal weightage दिया हुआ है for both vegetative as well as reproductive characters under this type of classification system. And example for this type of classification system is two kingdom system classification which has been given by Linnaeus. Next system है natural system of classification. So this considers external as well as internal feature. Basically this is little better compared to artificial. Even ultrastructure of the plant, structure of the organisms are also been considered over here. Anatomy, embryology को भी यहाँ consider करके classify किया हुआ है. And also it considers phytochemistry. Phytochemistry मतलब क्या? It is the chemicals which is present in the plant. The study of chemicals in the plants is called as phytochemistry. Okay, so it also consider phytochemistry. And example for this system of classification is Bentham and Hooker ने दिया हुआ क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक। ये तो आपको पता ही होगा, फाइलोजेनेटिक इज नथिंग बट इट्स अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच कंसीडर्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. Okay, and the last one is numerical classification system. So this uses computers. आपको पता होगा कोडिंग में ये 0 1 ये सारा नंबर्स को यूज करके हम कोडिंग जैसा थिंग्स को लिख लेते हैं ना. So this considers, I mean this uses computers and it is based upon all observable traits. So observable traits को, characters को इन्होंने यहाँ नंबर दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है. So all characters here are being given equal importance. Okay, so this is about different classification system, and as I just told in the beginning of the class, over the period of time हमारा understanding जो है plant kingdom के ऊपर ये बेहतर हो रहा है ना. So before we did not really classify the organisms in a perfect manner, लेकिन अब हम plant kingdom के अंडर algae मतलब thallophytes को पढ़ रहे हैं. After thallophyta we would be studying about bryophytes and then pteridophyte, gymnosperm, angiosperm. So these all are nothing but they are the divisions which come under plant kingdom. Okay, हम animal kingdom को we use the term phyla instead of division. Plant kingdom के अंडर जो groups है ना उसको हम divisions बोलते हैं. So the very first division we will be studying, that is algae, that is thallophytes. So why they are called as thallophytes? क्योंकि they have got thallus like structure. I mean they don't have a well differentiated leaf, stem or root, hence they are referred as thallophytes since they have got thallus. And all the algae, सारा algae जो है which comes under kingdom plantae, they are purely aquatic. Aquatic मतलब मेराइन बॉडी में हो सकता है, salty water में हो सकता है, जैसे sea ocean में हो सकता है, and also it can be present in fresh water. Fresh water मतलब river, lake का पानी में भी ऐसा ऐसा algae हो सकते हैं. Okay, so we will be studying about other characteristics of algae. So half of the total carbon dioxide fixation has been done by algae. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मतलब फोटोसिंथेसिस जो करते हैं, that is actually been done by algae. Okay, that too more than half of the total, मतलब 50% of all the carbon dioxide fixation, that is photosynthesis, is being performed by algae in the biosphere. और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है. Porphyra, Laminaria, Sargassum are among 70 species of marine algae that are edible. आपने कोरियन सीरीज या जापानीज सीरीज देखे हुए तो आपको पता होगा वो लोग ज़्यादा सीवीड्स को खाते हैं. सो ऑल ऑफ दीज सीवीड्स आर they belong to the group of this algae. Okay, so these are some of the species among 70 species which are edible. And many of the algae are also used as hydrocolloids. Hydrocolloids मतलब क्या? Which means these are the plants, okay, from which you can extract some substances, and these substances will be helping us in making some dispersion or gel या jellies. So gel, jellies type of materials को हम hydrocolloids बोलते हैं. And some of the example are algin and keratin. So algin has been taken from brown algae, keratin has been taken from red algae. Okay, and
दूसरा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अंडर algae, that is chlorella. Chlorella is a type of algae, green algae, which has been used as a food supplement as well by travelers. Okay, स्पेस में भी कुछ कुछ algae को यूज करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट. And there is another important material which has been extracted from algae, which is called as agar. Okay, agar होगा, agarose होगा. So ये जो सारा materials है, substances है, this has been extracted from algae. So agar has been extracted from Gelidium and Gracilaria. इसके बारे में हम पढ़ेंगे after some time. And the use of the agar is, of course, it has been used in making ice creams and jellies, because वो gel जैसे जेल जैसे मटेरियल प्रोड्यूस होता है इफ यू मिक्स दिस agar with the water. Okay, I mean even hydrocolloids as well, if you mix, by the way, these things can get mixed, can get dissolved in the water and we can produce gel like thing. Also agar का दूसरा जो importance है, it is nothing but it has been used in growing of microbes. Okay, सो माइक्रोब्स ग्रो करना, टिश्यू कल्चर में यूज़ करते हैं हम ये सारे मटेरियल्स को. ओके, अगार, अगारोज, दिस ऑल आर एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम algae itself. Okay, so this is about some of the characters. Now coming to reproduction. So algae show both sexual as well as asexual reproduction. फर्स्ट हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज विद द हेल्प ऑफ गैमेट्स, लेकिन गैमेट्स अलग अलग तरीके से होते हैं, लाइक दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ sexually reproducing gametes you get to see, that is isogamete, anisogamete and oogametes, oogamous. So isogametes मतलब क्या, नाम में ये iso मतलब same. So here the male and female gametes are exactly same in appearance, size, structure and so on. And ऐसा इस type of this type of isogametes you will be able to find in Eulothrix and Spirogyra. Next, anisogamous. Aniso नाम में ये आपको पता होगा, एनाफेस, दूसरा जो होमोलोगस एनालोगस. सो एना मतलब अलग अलग, like different. So here anisogamous means here the gametes which are being found, like male and female gametes, they look different. Okay, with respect to size हो गया, with respect to shape, so they will look different. Okay, whereas oogamous are the type of gametes. Here the female gamete is going to be large and non-motile, whereas male gamete is going to be small and motile. Okay, so that is nothing but oogamous. Example is volvox and fucus, whereas anisogamous के लिए example eudorina. Okay, फिर asexual reproduction के बारे में देखेंगे. Of course it happens mostly by zoospores. Zoospores मतलब motile spores. Okay, so that is about reproduction. अब हम detailedly ये जो क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ algae we will be seeing. So algae is being classified, मतलब thallophytes are being classified into 3 further groups. The very first group that we are going to study is Chlorophyceae. So there are 3 groups or class: Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. नाम में ये Chlorophyceae मतलब they are green in appearance, and hence we can call them as a green algae. जिसमें क्लोरोफिल होता है, ऐसा वाला चीज़ें ग्रीन कलर दिखेगा ही ना. सो हेंस दे आर कॉल्ड एज ग्रीन algae. सो यहाँ जो पिगमेंट है दे आर डेफिनेटली क्लोरोफिल ओनली. सो दे हैव गॉट क्लोरोफिल A and B as their pigment. That's why they are green in color. Okay, and the chloroplast shape is, see, after all these algae are sometimes unicellular, some of them are even multicellular. Okay, I mean, yeah, sorry, यहाँ हम यूनिसेलुलर algae को नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, हम मल्टीसेलुलर ही पढ़ेंगे एक्चुअली. या सो chloroplast is definitely going to be present in all the green algae. and ये क्योंकि क्लोरोफिल कहाँ रखेंगे, है ना. सो ये जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है ये अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट algae. ओके, सो सम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट शेप इज गोइंग टू बी डिस्कॉइड इन सम ऑफ द algae. डिस्कॉइड मतलब क्या, डिस्कॉइड मतलब इट्स अ राउंड शेप बट सेंटर में थोड़ा फ्लैटनेस दिखेगा आपको. ओके, दे हैव अ कॉनकेव शेप ऑन बोथ द साइड ऑफ द स्पेरिकल स्ट्रक्चर. ऐसे वाला स्ट्रक्चर को डिस्कॉइड बोलते हैं. ओके, कप नहीं, ऐसे, इसको डिस्कॉइड शेप बोलते हैं. ओके, कप लाइक क्लोरोप्लास्ट अलग है, क्लाइमेडोमोनास में कप लाइक क्लोरोप्लास्ट होता है. प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट आल्सो यू विल बी एबल टू फाइंड ओवर हियर. रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट यू आर एबल टू फाइंड. स्पाइरल शेप, स्पाइरोगायरा हैज गॉट स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर. सो अलग अलग क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है. एंड कमिंग टू द स्टोर्ड फूड, आफ्टर ऑल
they belong to the kingdom of plantae, so they will be also having the stored food. So यहाँ stored food जो है that is going to be starch, just like other plants. Okay, and cell wall, since they are plants, they do have got cell wall. So inner or outer cell wall होता है. Inner wall is made up of cellulose, outer cell wall is made up of pectose. Pectose अलग है, pectin अलग है. Pectose is water soluble, pectin is not soluble in water. That's it. Okay, and they also have got a special structure called as pyrenoid. Pyrenoid matlab it's a structure which has got protein inside and starch outside. And some of the example for chlorophyce is Eulothrix, Spirogyra, Volvox, Chlamydomonas and Chlorella. And to remember the examples, we have got a trick, that is US has very clean college. US is Eulothrix, Spirogyra, very is Volvox, Chlamydomonas is clean, Chlorella is college. So यहाँ हमारा chlorophyce खत्म हो गया. Next is pheophyce, that is brown algae. Okay. आपको कुछ कुछ पिगमेंट के बारे में ऑलरेडी पता होगा. क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर एंड xanthophyll इज येलो टू ऑरेंजिश कलर. सो ये जो फियोफाइसी है, यहाँ आपको ये फ्यूकोक्सांथिन करके एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट दिखने के लिए मिलेगा. एंड अलॉन्ग विद विच इट आल्सो हैव गॉट कैरोटिनॉइड plus chlorophyll A and C. So mainly because of the fucoxanthin and carotenoid, these algae look quite brownish in color. Hence they are called as brown algae. So hence they have got olive green to brown in color. Green Q, olive green Q because of the chlorophyll A and C. Okay, why brown color? Because of the carotenoid and fucoxanthin. And coming to the stored form of food. So यहाँ laminarian and mannitol करके substance जो है, this will be acting like a stored food. So they don't have a starch as a stored food. And cell wall is having the cellulose along with the algin. Algin तो अभी थोड़े टाइम के पहले ही देखा है हमने. Algin is a hydrocolloid करके. Yeah, so some type of a material which can form hydrocolloid can be also extracted from brown algae. Now coming to reproduction of Pheophyce. Reproduction happens with the help of both sexual as well as asexual gametes and spores. So asexual reproduction is with the help of zoospores. Okay, so asexual reproduction is with the help of zoospores. So naam mein hi hai, they are motile. So hence they will be having two unequal flagella. Unequal flagella hota hai yahan, which are laterally attached and they are of pear shape. And sexual reproduction is with the help of an iso and oogamous. Basically ऐसा अलग अलग type of gametes can be found when it comes to sexual reproduction. By the way, here we haven't discussed about reproduction है ना. So यहाँ भी sexual as well as asexual reproduction both you can find. लेकिन यहाँ sexual reproduction is not just with the help of spores. ये जो fragmentation vegetative type of reproduction can also happen over here in chlorophyce है ना. And sexual reproduction happens by anisogamous iso और oogammy हो सकता है. Okay, and when it comes to asexual, they too show zoospores, that is one with a flagella. So यहाँ हमारा रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया. जो यहाँ थोड़ा छूट गया था वो खत्म हो गया है ना. लाइक वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द रिप्रोडक्शन एज वेल. सो सिंपल है. द डिफरेंस बिटवीन द फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी विद रेस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन इज zoospores का flagella which is unequal and laterally attached. Okay, or sexual is common in both, and asexual reproduction is like more primitive over here. Apart from the zoospores, they also show vegetative reproduction and fragmentation जैसा asexual reproduction दिखा देते हैं chlorophyce plants ने. Okay, coming to Pheophyce, examples of Pheophyce are Sargassum, Ectocarpus, Laminaria, Fucus and Dictyota. इसको याद करने के लिए we have got a trick, that is self defense. Self में S is Sargassum, E Ectocarpus, L is Laminaria, F is Fucus, D is Dictyota. Next is Rhodophyce. हाँ, before that Pheophyce are after all again talophytes, right? So if you see chlorophyce, यहाँ आपको बहुत सारा जो आल्गे दिखने के लिए मिलेगा. दे आर यूनिसेल्युलर एज वेल. लेकिन यहाँ फियोफाइसी में आपको थोड़ा हायर प्लांट्स जैसा प्लांट्स दिखने के लिए मिलेगा. एंड दैट्स व्हाई दे हैव गॉट लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर. सो लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्रंट.
stem like structure is called as type, root like structure is called as hold fast. Okay, next is rhodophycy. As the name say rhodophycy, रोडो में आर है ना, ऐसे रेड में भी आर है. सो rhodophycy has got red in color, hence it is called as red algae. Why they are red in color? Mainly because of the pigment called as R-physerythrin. Okay, so R-physerythrin pigment they have got. अभी R-physerythrin ध्यान से देखो, erythrin word is common in erythrocyte as well. So erythro means like they have got red color pigment, hence the name erythrin. So they have got R-physerythrin, that is why they are red in color. Apart from that, they also have got chlorophyll A and D. And you will be able to see one common thing in all these algae. सारा जो यहाँ algae है, यहाँ chlorophyll A common है. Because chlorophyll A is a primary pigment for photosynthesis, है ना? That's why all of them will be having chlorophyll A. And coming to the stored food, यहाँ stored food जो है, this is Floridian starch. यहाँ laminarian starch और mannitol था, लेकिन यहाँ it is Floridian starch. Here they had just starch, है ना? And coming to reproduction, यहाँ they show only sexual reproduction, that is oogamy. They have got oogamous gamete, that's how they show sexual reproduction only. Examples are total 4: Polysiphonia, Porphyra, Gelidium and Gracilaria. The trick to remember is P square, G square. P square, there are 2P, that is Polysiphonia and Porphyra. G square, there are 2G, Gracilaria and Gelidium. So यहाँ हमारा algae का classification खत्म हो गया. Now coming to the next division which comes under kingdom Plantae, that is Bryophytes. So Bryophytes are called as amphibians of plant kingdom क्योंकि they need water for completion of their sexual reproduction. Okay, and the main plant body जो यहाँ दिखने के लिए मिलेगा, that is gametophyte plant body, which means that they have got haploid plant body which can produce gametes. Okay, and sex organ, here you get to see male and female sex organ. कुछ plants में male और female प्लांट ही अलग है क्योंकि अलग अलग प्लांट में आपको अलग अलग सेक्स ऑर्गन दिखने के लिए मिलेगा. सो मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथेरिडियम, फीमेल इज कॉल्ड एज आर्किगोनियम विच इज फ्लास्क शेप्ड. And some of the examples are sphagnum. Sphagnum will be able to produce peat, मतलब एक तरह का fossil मानो, and such peat will be helping in producing fuel and even as a packing material. Okay, now they too have good sporophyte body you get to see in them. Sporophyte में foot, setae, capsule मिलेगा दिखने के लिए, and sporophyte would be produced by gametophyte in bryophytes. Okay, now coming to classification, though according to NCERT there are two main groups which comes under bryophyte. Actually तीन है, लेकिन NCERT, according to NCERT there are two groups, liverworts and mosses. Okay, क्यों ये नाम दिया हुआ है liverwort? क्योंकि the leafy like structure they have got, it has got liver like appearance, that's why the liverwort the name. Okay, and ऐसे explain करते हैं ये जो plants के, like when we are explaining these plants we explain it as thallus is dorsoventral and closed appressed to substrate. मतलब जो thallus जो है, मतलब जो plant body जो है, it will be appearing as if it is closely attached to the substratum. Okay, and they also have got a special structure called as gemmae. So ये gemmae जो structures है, so they will be having gemmae cups, and it is a asexually reproducing structure, and also they have got green and green color with a multicellular buds. So this is about the gemmae and gemma cup, and example for liverwort is Marchantia. See, even though here I have talked about gemmae which is a asexually reproducing birds, it doesn't mean that ये जो liverworts है, it doesn't mean they just show only asexual reproduction. No, they also show sexual reproduction. So both male as well as female Marchantia can have gemmae cups. मेल मार्कैंशिया में आपको एंथेरिडियम दिखने के लिए मिलेगा along with the gemmae cup. फीमेल में फीमेल मार्कैंशिया में, that is फीमेल लिवरवर्ट में आपको gemmae cups के साथ आर्किगोनियम भी मिलेगा. ठीक है, so that is about liverworts. Next is mosses. So we already know that in bryophytes you get to see gametophyte being main plant body, and in gametophyte
we will be able to see, on gametophyte we will be able to see sporophyte. Basically sporophyte is not independently existing in bryophyte, and sporophyte is dependent on gametophyte in all bryophytes for nourishment, photosynthesis, all these things. So ye jo gametophyte hai, which is in mosses, they have got two main structure, that is leafy stage and protonema. So leafy stage में आपको, I mean leafy stage would be having sex organ also. It is going to be developed from protonema. Protonema से जो develop होता है, that is a leafy stage. Okay, after all photosynthesis and all will be happening in the leaf only, है ना. So mosses also show both sexual as well as asexual reproduction. So asexual reproduction is by vegetative reproduction, that is with the help of fragmentation and budding from protonema. Okay. And example for mosses can be Funaria, sphagnum and polytrichum. So to remember all of these examples, that is सारा bryophytes का examples याद करने के लिए आपको एक trick है. The trick is PM फंस गए. PM, P stands for polytrichum, M is marchantia. फंस में F is fucus, S is sphagnum. Okay, so यहाँ हमारा bryophytes खत्म हो गया. Next we will be seeing pteridophytes. Okay, so pteridophytes are the first terrestrial plants to have a vascular tissue. Okay, मतलब bryophytes में भी होता है vascular tissue, but it is not a pure terrestrial plants, right? Bryophytes को moisture चाहिए होता है. Okay, so without moisture bryophytes cannot survive. That's why we have studied in the initial part. They need both water as well as land. Like water is for sexual reproduction. लेकिन pteridophytes can survive without water, but however इनको भी वाटर चाहिए. मैं आगे बोलूंगी कब चाहिए. दैट इज मेनली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मेल गैमेट्स एंड ऑल. ओके, सो यहाँ जो मेन प्लांट बॉडी आता है, दैट इज गोइंग टू बी स्पोरोफाइट. इवन दो द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, अनलाइक क्या है हमारा ब्रायोफाइट इफ यू कंपेयर, बट द मोस्ट ऑफ द फेज दैट these plants would be having in their life is going to be gametophyte. Okay, now so since sporophyte is a main plant body, यहाँ आपको leaf like structure, like better leaf like structure आपको दिखने के लिए मिलेगा compared to that of the bryophytes and algae, है ना. So you get to see two types of leaves in different plants. So जिसमें छोटा छोटा leaves है, those leaves are called as microsporophyll. Sorry, microphyll. Micro मतलब छोटा, fill मतलब leaf. Okay, and such type of leaves you can see in Selaginella. And large leaves मतलब बड़ा बड़ा leaves, macrophyll, आपको कहाँ दिखने के लिए मिलेगा? ferns में दिखने के लिए मिलेगा. You would have seen ferns. Okay, Selaginella तो थोड़ा rare है, so यहाँ छोटे छोटे leaves दिखने के लिए मिलेगा. And यहाँ sporangium होता है on sporophyll. Okay, सो एक तरह का लीफ, आई मीन माइक्रोफिल होगा या मैक्रोफिल में होगा, आपको स्पोरोफिल दिखने के लिए मिलेगा. वहाँ स्पोरांजिया होता है विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स. ओके, सो दैट्स व्हाई दे हैव गॉट cones, like cone like structures. They would be small cone like structures they would be having in their sporangia, and that this is seen in Equisetum and Selaginella. And of course we will be seeing all the examples with the help of a trick. And gametophyte plant body में आपको प्रोथैलस दिखने के लिए मिलेगा. So they are very small and very inconspicuous, मतलब छोटा सा होगा, and they are going to be free living. Okay, and as I told in the beginning, यहाँ भी थोड़ा सा पानी चाहिए होता है pteridophytes के लिए for transportation of male gametes. Okay, ट्रांसफर करना है ना male gametes to the female part, उसके लिए पानी चाहिए होता है. That is why we get to see pteridophytes as well in bit of moisture area. Okay, so coming to the type of spores, यहाँ दो तरह का spores होता है, homospore, heterospore. Homo मतलब same type of a spore. Heterospore means different type of spores. Okay, so two type of spores we get to see, and the spores which are different type is called as micro and macrospore. Micro मतलब छोटा, macro मतलब बड़ा spore, which is seen in Salvinia and Selaginella. And coming to the classes, there are 4 classes under pteridophytes, that is Psilopsida, under which you get to see Xylotum; Lycopsida, under which you get to see Selaginella and Lycopodium; Sphenopsida, under which you get to see Equisetum. Horsetail is a common name of Equisetum. Pteropsida, under which you get to see Diopterus and Pteris. Even Ediantum also belongs to this group only. Okay, and to remember all of this example of pteridophytes, I have got a trick, that is please sahi pado.
सही से पढ़ो प्लीज, सही पढ़ो प्लीज। में P stands for Xylophyton, L is Lycopodium, E is Equisetum, A is Radiantum, S is Salvinia, another is Selaginella, P is Pteris, D is Dryopteris. So यहाँ हमारा pteridophytes खत्म हो गया. By the way, pteridophyte नाम जो है ना pteridophyte, what does this pteris stands for? Pteris means feather. Okay, इसलिए ferns, horsetail ये सारा इसी ग्रुप का बिलोंग करने वाला प्लांट्स है. बाय द वे, व्हाई द नेम हॉर्सटेल फॉर हॉर्सटेल? हॉर्सटेल का साइंटिफिक नेम इक्वेसिटम होता है. इक्वस इज द जीनस ऑफ द हॉर्स. ओके, सो हॉर्सटेल क्यों नाम है? क्योंकि हॉर्सटेल जैसे ये प्लांट्स दिखता है. दिस इज व्हाई द नेम हॉर्सटेल और इक्वेसिटम. सो द लास्ट बट सेकेंड डिविजन इज जिम्नोस्पर्म्स. ओके, सो जिम्नोस्पर्म्स मीन्स नेकेड सीड. मतलब यहाँ फ्रूट्स नहीं होता, मतलब फ्रूट्स वोंट बी कवर्ड बाय द सीड्स बट सीड्स आर प्रेजेंट. ओके, सो वी विल बी स्टडिंग सम ऑफ द फीचर्स, यूनिक फीचर्स. साइकस आपको पता होगा, साइकस पाइनस. यहाँ जो साइकस है ना, साइकस वुड बी हैविंग अ कोरलॉइड रूट. सो इफ यू अपरूट द साइकस plant and if you see, the root is going to be quite greenish bluish in color, क्योंकि ये साइकस का रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है with the help of cyanobacteria. So you get to see, also you get to see symbiotic association between fungi and root of pinus. मतलब pinus भी अपना रूट में fungi को मतलब जगह देता है, and that's how they show symbiotic relationship, and this is called as mycorrhiza. ओके, एक्चुअली दोनों एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही है. ओके, साइकस एंड साइनोबैक्टीरिया, पाइनस एंड फंगाई, है ना. एंड ऑल ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोर्स, मतलब अलग अलग स्पोर्स आपको दिखने के लिए मिलेगा, अनलाइक द टेरिडोफाइट्स. सो लेट्स स्टडी अबाउट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ सम ऑफ द व्हाट इज इट जिम्नोस्पर्म्स, स्टार्टिंग विथ कॉनिफर्स. ओके, सो कॉनिफर्स आर द टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. इसको ऐसा नाम क्यों है? बिकॉज दे लुक कोन लाइक. आप ये जो मनाली में मनाली होगा या हिमाचल में आप देखने के लिए मिलेगा ऐसा ऐसा वाला ट्री, स्पाइनस, साइकस एंड ऑल. सो एज अ नेम से, लाइक I'm not talking about cycas, I'm talking about conifers. So conifers के अंडर हमारा pinus आता है. So they have got needle-like leaf and also they have got sunken stomata and also they have got thick cuticles. So if you see most of the gymnosperm, like even cycas and pinus, they live in quite extreme weather. Okay, if you consider conifers like pinus, ये कहाँ मिलेगा? हिमाचल ऐसे ऐसे जगह में मिलेगा दिखने के लिए, है ना. यहाँ अच्छे से लाइट नहीं आता, यहाँ अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं होता. सो नॉट ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज आर एबल टू ग्रो ओवर हियर. ओके, सो इन ऑर्डर टू prevent transpiration or in order to efficiently do photosynthesis, they have to conserve the water as well, है ना. पानी को भी कंजर्व करके रखना होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस. सो दैट इज व्हाई दे हैव गॉट नीडल लाइक लीव्स एंड दे आल्सो हैव गॉट sunken stomata and they have very thick cuticle, okay, to prevent transpiration, so to conserve the water. Okay, and they have got something called a sporophyll. ये तो हम previous division में भी देख रखा है. sporophyll is type of structure which you get to see in leaves of the plants, and the sporophylls are arranged spirally to form cone like structure. Okay, and there are two types of cones that you get to see in gymnosperms like pinus and cycas, that is male and female cone. So male cone will be having microsporophyll, female cone will be having megasporophyll. Okay, so microsporophyll plus microsporangia will be forming male strobili, which is also called as microsporangiate structure. फीमेल स्पोरोफिल्स को हम मेगास्पोरोफिल्स बोलते हैं. along with the megasporophyll, megasporophyll and megasporangia together form male strobili, also called as macrosporangiate. Okay, अभी ये जो मेगास्पोरेंजिया में जो मेगास्पोर होता है, that will be further developing and they will be forming some one or two or sometimes even more archegonia, which is a female sex organ of the gymnosperms. Okay, now coming to gametophyte. यहाँ gametophyte separately जैसे bryophyte, teridophyte में हम देखा है, ऐसा नहीं होता. यहाँ gametophytes are actually present on the sporophyte only. Okay,
So, gametophyte is not free living and they are very highly reduced. Actually, in gymnosperm and angiosperm, you get to see gametophyte becoming very small and almost, it is completely dependent on sporophyte. Okay, by the way, what is the literal meaning of sporophyte, gametophyte? Sporophyte मतलब क्या है? Sporophyte. So if you consider in any random tree or plant, जैसे mango मानो या rose plant मानो, sporophyte is that plant body. स्टेम लीफ ये सारा स्पोरोफाइट है एंड डेफिनेटली एंजियोस्पर्म स्पोरोफाइट इज मोर डोमिनेंट. गेमेटोफाइट मतलब क्या है? जो ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज एक्चुअली अ गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी, है ना. जैसे फ्लावर इज अ गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी ऑफ अ प्लांट. सो in gymnosperm and angiosperm you get to see reduced gametophyte plant body compared to that of the sporophyte. And coming to example of gymnosperms, we have just 4 example. Pinus cycas is a main example. So sequoia is the largest gymnosperm and ginkgo is a living fossil. Okay, so to remember all these gymnosperms we have got a trick, that is PC से CS गया. PC मतलब सिस्टम, आपको पता होगा, ये सिस्टम को हम पीसी बोलते हैं ना, लाइक जहाँ सारा कंप्यूटर्स को, मतलब कंप्यूटर को हम पीसी बोलते हैं. सो कंप्यूटर से कंप्यूटर साइंस ही गया, पीसी से सीएस गया. ओके, सो दिस इज अ ट्रिक. एंड लास्ट डिविजन इज एंजियोस्पर्म. ओके, सो एंजियो मतलब एक्चुअली क्लोज्ड. ओके, एंजियो मतलब क्लोज, सो दे आर नॉट नेकेड, दे आर क्लोज्ड सीड, मतलब दे हैव गॉट फ्रूट. ओके, यहाँ फ्रूट एंडोस्पर्म सारा होता है. सो अबाउट एंजियोस्पर्म वी विल बी स्टडिंग इन वेरी मच इन डिटेल इन सेक्सुअली प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. एंड अलग अलग एंजियोस्पर्म्स को हम मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसका एनाटमी को हम एनाटमी में पढ़ेंगे. ओके, सो angiosperms are the only flowering plants and the smallest one is Wolffia. The smallest angiosperm is Wolffia. The largest one is Eucalyptus. Okay, एंड ये जो डिवीजन है यहाँ आपको 2 क्लासेस दिखेगा, दैट इज डाइकॉट एंड मोनोकॉट. एंड दे हैव गॉट देयर ओन डिफरेंसेस. मोनोकॉट में आप सिंगल कॉटलेडन को देखोगे एंड दे हैव गॉट अ पैरेलल वेनेशन, फाइब्रस रूट सिस्टम. डाइकॉट में आप टैप रूट सिस्टम देखेंगे, दे हैव गॉट अ रेटिकुलेट वेनेशन एंड दे हैव गॉट 2 कॉटलेडन. सो दैट इज अबाउट डाइकॉट एंड मोनोकॉट. सो यहाँ हम ये जो चैप्टर है प्लांट किंगडम को खत्म किया. सो देयर इज वन टेबल which has been given in NCERT about algae, which we will be quickly एक बार ऐसे देखेंगे. क्लोरोफाइसी ग्रीन algae, ये पिगमेंट ऑलरेडी हम देख रखे हैं एक्चुअली. स्टार्च is a stored food, cell wall has got cellulose. And coming to the flagella position and number 2 to 8 equal apical flagella you get to see in the spores. And habitat is fresh water, brackish water, salt water. Phaeophysi, brown algae, AC, chlorophyll और fucoxanthin होता है. mannitol laminarians होता है. cellulose algin cell wall में होता है. 2 unequal lateral flagella you get to see right in spores. And habitat fresh water, brackish water, salt water. rhodophycerid algae, chlorophyll AD होता है. फाइसेरिथ्रिन होता है, यहाँ फ्लोरिडीन स्टार्च होता है. सेल्यूलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर्स इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल एंड देयर इज नो फ्लैजेला एज सच इन द स्पोर्स. बाय द वे, rhodophyce is a proper what is it? They show sexual reproduction only, right? They don't show asexual reproduction. So that is about they show only oogamous gamete. And they are also fresh water, brackish water, salt water. So ये जो टेबल है जो प्लांट किंगडम में दिया हुआ है, दैट वी हैव डिस्कस. सो दैट इज अबाउट द चैप्टर प्लांट किंगडम. नेक्स्ट चैप्टर मतलब कल आपको एनिमल किंगडम का माइंड मैप एंड क्विक डिस्कशन मतलब रिविजन मिलेगा. सो अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.